completed the I have a doubt. Right? Did we completed the absorption part? Just a minute. Let me check it with my notebook as well. Yes, yes, yes. Okay, okay. Sorry. We are just supposed to start with the chemical coordination, right? Chemical coordination. Where are the rest of people? Ayushi and- So look, this is the time to start. Let's start and let the other people to come and join us. So the next chapter is, yes, in last class we completed neural system, and today we are supposed to start with chemical control and coordination. Rather than say endocrine. Right, endocrine system. So endocrine system, first we'll types of gland. Types of gland. Types of gland. And so you have to just put the heading types of the gland, right? So we'll study the types of the gland, then I'll teach you the chemical nature of hormone. So there are two type of the gland. Somehow we have discussed all these concepts, some of the concepts, many places. So there are two type of the gland in our body, exocrine and endocrine, right? So let me first make you understand. So there are two type of the glands in our body. So the first type of the gland, they are called actually exocrine. Exocrine gland. First, I would like to make you understand what these glands are clearly, then we'll go ahead. And the second one are endocrine gland. Endocrine gland. Out of these glands, look, exocrine gland, they basically do not have any duct, or sorry, they have duct, right? So they pour their substances or chemical secretion with the help of duct. Actually their chemical secretion is enzyme, right? So they pour the enzyme, right? And they release substances, they release these enzyme with the with help of duct, right? So they are called the gland with the duct. Exocrine glands are the gland with the duct, right? So they release their particular substance at a specific place. For sake of example, right? For sake of example, there is a gland, we call it pancreas, and pancreas have a duct or a pipe, and that you call pancreatic duct. So pancreas is a gland with the duct. So pancreatic duct term is gland tube, right? So pancreas releases its enzyme with the help of pancreatic duct, and where it releases at the duodenum part, right, of small intestine. Again, endocrine gland. Endocrine glands are basically they are responsible for secretion of hormones. Again, these glands do not have ducts, so they are ductless glands.
So how they release their hormones? Hormones So are they released directly secrete in the blood. exactly, and they work at the target organ. Right? Hormones secreted in blood. Right. For sake of example, again, so pancreas have dual function. It is exocrine gland as well as endocrine gland. We have studied in the chapter digestion that there are cell of acne which are responsible for release of pancreatic juice. But in the same time, there are another kind of the cells are present in the pancreas which releases hormones. They are called isolate of Langerhans. So again, the example is pancreas. So pancreas releases the enzyme with the help of duct, pancreatic duct, but it releases the insulin in the blood. So there are two types of blood. Please note it down. Yes, sir. Done. Exocrine gland, put the heading. Exocrine gland are the gland with duct. Exocrine gland are the gland with duct. Full stop. Secretion is carried out. Secretion is carried out through duct to a particular organ. Secretion is carried out. Secretion is carried out through duct to a particular organ for some metabolic activity. Particular organ for some metabolic activity. Example, salivary gland. Example, salivary gland. Full stop. Next, endocrine gland. Endocrine gland. They are ductless gland, or they are ductless gland, or the gland of internal secretion. Gland or internal secretion. Full stop. Secretion is directly released into blood. Secretion is directly released into blood. Full stop. Secretion is called hormone. Secretion is called hormone. Right? Now, what are actually hormones? So, how you will define hormones? So, we are going to study over here about the endocrine, right? So, out of these endocrine gland are of two types. Right? So, I'll tell you what are the hormone. And before going into the hormone, I would like to tell you the types of endocrine. Again, endocrine glands are of two types. So they are called either holocrine gland. Can you tell me, Aditi, what are the holocrine gland? And then heterocrine gland. Heterocrine gland. Right. Look, holocrine gland are those glands which exclusively, right, which exclusively secrete, hormone. They do not have any other function like other than secretion of hormone. Example, pituitary, right? Now, heterocrine gland, they have enzyme secretion plus some other function as well. Means that function may be secretion of
hormone enzyme. They may sorry, secretion of hormone, not enzyme. They have secretion, hormone secretion. So hormone secretion is one of the function, and other function as well. They have other function as well. Like for sake of example, like that is this one. Or this one, pancreas. So pancreas have some other function, that is secretion of sometime other than secretion of enzyme. Other functions are also there, like ovary. So what ovary did? Ovary secrete progesterone, estrogen. Along with that secretion of estrogen and progesterone, it also secrete egg, right? So like release of egg takes place with the help of ovary only. So they have other function as well, right? So along with the hormone secretion, they have some other function as well, right? So please note it down. So first, I would like to dictate the what are the hormones. So please note it down. Hormones are non-nutrient chemical. Hormones are non-nutrient chemical which act as intercellular messenger, which act as intercellular messenger and produced in trace amount. Produced in trace amount means very less amount. Next, holocrine gland. Put the heading holocrine gland. The endocrine gland that secrete the endocrine gland that secrete only hormones. The endocrine gland that secrete only hormones are called holocrine gland. Example: adrenal that secrete only hormone. That secrete only hormone are called holocrine gland. Example: adrenal gland, thyroid gland. Next, heterocrine gland. Heterocrine gland. The gland which secrete hormone. The gland which secrete hormone and having some other function are called heterocrine gland. Example: pancreas, ovary, etc. There is some factual thing, so please note it down, that those factual things as well. So who discovered first hormone, right? So put the star mark. The first hormone was discovered by William M. Bellis. William M. Bellis. First hormone was discovered by William M. Bellis and Ernest H. Sterling. And Ernest H. Sterling. Ernest H. Sterling in 1903. The term hormones in the same point.
the term hormone was introduced, the term hormone was introduced by Starling. The term hormone was introduced by Starling in 1905. Next, hormones are chemical messenger. Next point, hormones are chemical messenger which act as target cell or target organ. Hormones are the chemical messenger which act on target cell or target organ. So this is called actually cell signaling or cell targeting, and we study actually these all topics in master classes in MSc. What are the cell signaling? So do you have any rough idea how does the enzyme hormone work? Any idea? Ayushi? Aditi, any idea? How does hormone function? Because all kind of hormones remains dissolved in our blood. So how does they work? How does they function? Sir, they decode at specific organs. They they work on a specific organ, but how does they work? So receptors of the cells. Right, very good, receptors. So tell me something more if you have any idea. Very good. Whatever you told, that was very correct. Look, how does actually a hormone work? So for sake of example, suppose that this is a particular organ. So example, for sake of example, this is a pancreas, and pancreas is releasing a particular type of the chemical, and that chemical, the shape that chemical is this one. This is a hormone, right? So this hormone is insulin, right? So it may be, so what the chemical it may be? It may be a lipid, it may be lipid, it may be lipid, it may be protein, it may be fat, it may be anything, right? So whatever the thing is, again what happened? So suppose that this is a target cell. So this hormone will keep on floating in blood until it reaches to its a particular target cell. So this is target cell, right? So this is a target cell. This is a target cell, right? This is targeted cell, right? Now what will happen? This hormone will reach to the, so these are the targeted cell. They have a particular type of receptor. So they are called receptor. Receptors are made up of protein, right? Particular receptor will receive only particular type of the hormone, right? Every kind of the hormone will keep on floating in the blood, but particular cell receive a particular particular hormone. So this hormone will get fit into this targeted receptor, and whenever they will be recognized by receptor, this receptor will give further a reaction. Chain reaction will start going on inside the cell, and the cell will start working. That is called cell targeting. How does the hormone target the cell? So for particular hormone, every cell where the target cell, so target cell is where target cell is, that have to be affected, that will be affected by. For sake of example, insulin works at liver, right?
So wherever this insulin will reach to the liver, then only the insulin will start working, else it is not going to work anymore, right? So that's how hormone work. So please note it down. Hormones have low molecular weight. Hormones have low molecular weight. Full stop. They may be Hormone. hormones have low molecular weight. They may be amino acid derivative. They may be amino acid derivative. Amino acid derivative, comma, maybe peptides. Amino acid derivative, maybe peptides, comma, polypeptide, maybe peptide, polypeptide, or steroid, peptide, polypeptide, or steroids. So these are the actually hormones. Next point. Many hormones. Keep this thing in mind. What can be the hormone? What is the chemical nature of the hormone? That have been already asked in medical examination. That is a question for your NEET examination. So they may be amino acid derivative, means they may be protein. They may be peptides, it's polypeptide. They may be polypeptide. They may be steroid, and rest of them. Right. So please, next. The chemical nature of what are the chemical nature of hormone? Now we are going to discuss deeply in the chemical nature of hormone. So chemical nature. I have some, like, I want to discuss with you briefly what is the chemical nature of hormone. Chemical nature of hormone. So they may be either amino acid derivative. What is the example for that? For sake of example, melatonin, epinephrine, etc. Second, they may be protein hormones. They may be protein hormones. Yes, protein. So all the enzymes are protein. Like, but the hormones may also be protein. So, for example, oxytocin, insulin, etc. Iodothyronine, iodothyronine. Examples: thyroxine, right? Steroid, they may be steroid. Hormones may be steroid. Example: testosterone. So please note it down with the example. Like, what is the chemical nature? Even it can be asked your school exam, that is board examination.
Please note it down. Done? Note it down. Yes, sir. Okay. So one more important thing. Please note it down the difference in hormone and enzyme. That is exclusively for your board examination. Right? It's a school examination, right? So in a school examination, chemical nature of the hormone you can get holokine and heterocrine gland, 2 marker question. Chemical nature of hormone, 2 marker question. And the difference between the hormone and enzyme, it's very important for your school examination. And you can get the 3 marker question. So for sake of 3 marker question, at least you must write the 6 point, at least 6 points. So hormones. Yes. So what is the difference in hormone and enzyme? Look, hormones. And enzyme. Keep on writing the one difference, right? So first difference is hormones. They have low molecular weight. They have low molecular weight. Enzyme. They have very high molecular weight. They have very high molecular weight. They have very high molecular weight. Second, hormones may be steroid, peptide, or amino acid derivative, while all enzymes are made up of protein. All enzymes are made up of protein. All enzymes are made up of protein. Next, hormones. They may act slowly or quickly. They may act slowly or quickly. That depends on the hormones to hormones. Some have the very great pace of reaction. Some have very slow pace of reaction. It depends. Next, they are used up in reaction. Hormones are reused, but they are used up in reaction. Fourth point. So hormones may be accelerator, means they may be catalyst, or they may be inhibitor. So both kind of the hormones are found. So the hormones may accelerate. This question have been seen in NEET. They may accelerate or retardate. They may accelerate or retardate rate of reaction. They may accelerate or retardate rate of reaction. And enzymes are just catalyst. They speed up reaction. They speed up reaction. Speed of reaction. Again, fifth point. Hormones controlled reaction are not reversible. Hormone
controlled reactions are not reversible, but the enzyme controlled reaction, they are reversible. Enzyme controlled reactions are reversible. And put a note as well here. Have a note, put a note. What is the role of vitamin? Anyone of you tell me what is the role of vitamins? Why we require vitamin? Tell me. Why vitamins are needed for our body? Sometimes we go to the doctor, they say that you have certain deficiency of this and this vitamin. So what exactly vitamin do in our body? Why they are required for our body? Yes, Sir, Aditi. for the production of hormones. For the production of hormone. Okay. Aditi, any idea? Surat? Look, actually, vitamin act as a helping hand of enzyme, right? So vitamin act as coenzyme. So they help enzyme to perform their function, right? So normally, if someone asks you or the question asks you what are the vitamins, so you have to say they are coenzyme, and you must be remember I have given you notes as well for in the biomolecule where the I have shown the diagram of enzyme and I have told you what are the coenzyme. Clear? Remember? Please note it down. Vitamins act as coenzyme. Vitamin act as coenzyme as they help enzyme as they help enzyme to perform their function as they help enzyme to perform their function, right? So now we are going to discuss different glands, right? So types of the endocrine gland which are found in our body. So the next topic for the heading, types of gland. So look, these are the actually types of gland which are found actually in our body. So actually the location of gland must be clear to you. In your school examination, they can ask you what is the location of the gland, right? So you must be clear with the location of gland. That's why this diagram is really very important for you. So first, you will see there is a hypothalamus gland. Hypothalamus. Look, hypothalamus gland is actually called secretary of pituitary gland. Why? Because it helps pituitary gland to perform certain function. It guide pituitary gland. So it help pituitary gland.
and it secrete many kind of the hormones as well, like it is written over here: dopamine, vasopressin, somatostatin. So they will study all these. So they are the actually part of brain as well, but they are the glands as well, right? And they are found in the brain, and they control our body function with the help of this one, with the help of their hormones, right? So they are responsible for chemical coordination. और देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारी पीनियल ग्लैंड है ना, ये हो गई हमारी पीनियल ग्लैंड। सो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, और ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, राइट? तो ये हमारी मास्टर ग्लैंड है ना। तो मास्टर ग्लैंड, व्हाई वी कॉल इट मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी जितनी सारी हमारी बॉडी की ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करने का काम करती है, राइट? तो बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल, इसको सजेशन कौन देता है? इसको सजेशन देता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करती है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, हाउ डज इट वर्क? सो विल स्टडी इन व्हेनेवर आई विल डिक्टेट द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आप देखो ऊपर की तरफ क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि ये भी एक तरह से डिजेनरेट होने वाली ग्लैंड है, धीरे धीरे ये वेस्टिजियल ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसका फंक्शन वेल नोन नहीं है। एक तो मेलाटोनिन सिक्रीट करती है जो हमारी बॉडी को स्लीप, इसको स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है, मतलब जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक हमें नींद नहीं आएगी। इसके नीचे आप देखेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है ना, यहाँ पर ये थायराइड एंड पैराथायराइड, राइट? थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में है ना थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने का काम करती है, राइट? इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड हो गई और ये थाइमस ग्लैंड है ना। थाइमस के नीचे यहाँ पर देखो स्टमक है। स्टमक में भी आपने देखा कि कुछ गैस्ट्रिन वगैरह सिक्रीट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। गैस्ट्रिन सिक्रीट करने का काम होता है। यहाँ पर लिवर, हमारी लिवर भी ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है ना। ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड हो गई जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एड्रेनालिन वगैरह यही सिक्रीट करने का काम करती है ना। काफी क्वेश्चन इससे पूछा थे। किडनी भी क्या करती है कि देखो आप रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, इस तरह के कुछ हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती है। तो किडनी भी कुछ पर्टिकुलर चीजों को सिक्रीट करने का काम करती है ना। तो किडनी को भी आप हेट्रोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि यूरिन को सिक्रेशन करती है और किडनी का हार्मोन भी सिक्रीट करती है ना। इसके दो फंक्शन है। इसी तरह से टेस्टिस भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और स्पर्म भी सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर यूट्रस भी यही काम करता है, और ओवरी ओवरी दोनों मैं बता ही चुका हूँ हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज भी हेट्रोक्लाइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है। तो ये हमारी ग्लैंड्स की लोकेशन है। एक एक करके हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, जो सबसे पहले हम लोगों को ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, है ना। काफी बड़ा चैप्टर है और हमें चीजों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड। हेडिंग डाली थायराइड ग्लैंड। तो फर्स्ट हेडिंग है thyroid gland. Give me just one. So first is thyroid gland.
Look, thyroid gland secrete thyroxine. How does it secrete thyroxine, right? And what is actually thyroxine? We'll discuss all these concepts over here, all those things. What causes by their defect, right? So first is thyroid gland, right? So in this thyroid gland, look, there are certain structure found in thyroid gland. We have already like look, a few minutes before I have told you, I was just telling you that the out of these types of gland, so thyroid and parathyroid both are found over here, right? So this is the thyroid and parathyroid. So this is the location. They are found at our neck. They are actually called the growth gland because they are responsible for secretion of growth hormone. So first I would like to show you the diagram of thyroid and parathyroid, both of the gland, because both are the found thyroid. Look, this is the actually thyroid gland, right? So thyroid gland is found in our body at neck part, so almost below the larynx. So you will see it. This is called thyroid cartilage, and this is actually thyroid gland. Uh, this is the ventral side. At the dorsal side of the part, the thyroid gland have also parathyroid gland, and it remains stuck with the trachea. This is our windpipe. Trachea means windpipe. We know it as windpipe. Inside the thyroid gland, there are certain type of vesicles. So thyroid gland, it have certain type of vesicles. So these are the structure of vesicle. The cells or vesicles. These are the vesicles. This is called thyroid follicle. These are called thyroid follicle. Thyroid follicle contain a colloidal substance that is called T3 and T4. So inside the follicle, there is certain substance. So inside thyroid follicle, there is colloid containing T3 and T4. Colloid containing T3 and T4. What is T3 and what is the T4? Actually, T3 is called T3 is called triiodothyronine. T3 is called, the name of the T3, it is called triiodothyronine. And T4. T4 is called tetraiodothyronine. Triiodothyronine, tetraiodothyronine, right? And these two are these two are the hormones which are secreted by this follicle, right? And above the follicle, there are certain cells. These are called actually C cells above the follicle. So around the follicle, there are some different kind of cells. So above the thyroid, there are these kind of the cells. These are called C cells. Keep all these cells, name of these cells in your mind. C cell is responsible for secretion of thyrocalcitonin. So actually, thyroxine is the mixture of three things: thyrocalcitonin, triiodothyronine, and tetraiodothyronine. Right. So these are the three hormones which are secreted by thyroid gland. Clear to you? Please Yes. keep on writing the way I am writing over here. Put a rough diagram and keep on writing along with me. सर सी सेल्स का फंक्शन फिर से बता दो. सी सेल्स थायरोकाल्सिटोनिन सिक्रीट करने का काम करती है, थायराइड फॉलिकल के अराउंड पाई जाती है. ओके. है ना? आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर डॉक्टर कैल्सिटोनिन हार्मोन देते हैं. कैल्सिटोनिन की वो लिक्विड या टेबलेट टाइप की आती है.
Guys, please slow it down. Give me just 10 seconds. I'm coming back. Start noting down, please. So this is the largest endocrine gland. Underline करो भाई. Endocrine glands में सबसे बड़ी endocrine gland यही है. This is the largest endocrine gland, located anterior to thyroid cartilage. हम लोग देख चुके हैं जब हम हाँ जी, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक है. देखो मैं आपको बता चुका हूं कि ये लैरिंग्स वाले पार्ट पे जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था मैंने आपको लैरिंग्स पढ़ाया था. लैरिंग्स में मैंने आपको थायराइड कार्टिलेज बताया हुआ था ना, तो नोट करेंगे. दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड located anterior to thyroid cartilage of larynx, thyroid cartilage of larynx in neck. Full stop. Next point. Very important, स्टार बना के क्वेश्चन लिखेंगे. This is the only gland that stores hormone in large quantity, for about 2 months. Next point. It secretes three hormones. Called thyroxine. Which is the mixture of T3 and T4. तो यहाँ पर जो T3 और T4 का जो कॉम्बिनेशन है, इस T3 और T4 के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको थायरॉक्सिन. So thyroxine is combination of triiodothyronine and tetraiodothyronine. Full stop. Thyroxine is secreted by, in the same line, thyroxine is secreted by follicular cells. Next point. Thyrocalcitonin
thyrocalcitonin is secreted by C cells. Thyrocalcitonin is secreted by C cells. Full stop. Next is function. Put the heading. What is the function? So these are the hormones that we have discussed. Now we are going to discuss with the function of hormone. Now, what is the function? Note down, please. First point. It regulate metabolic rate. It regulate metabolic rate. Next point. They stimulate protein synthesis. Keep on writing in this point form. They stimulate protein synthesis. Next. They regulate development of mental faculty. Next point. Increase in heat production. Underline karo, increase in heat production to maintain body temperature. Increase in heat production to maintain body temperature. Next. Very important question that have been asked in medical examination multiple times. They are responsible for metamorphosis. They are responsible for metamorphosis in frog tadpole. Look, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछा क्या गया. तो क्वेश्चन जो पूछा गया आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन ये था कि इफ द आयोडीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर in which the frogs are living, what will happen? ठीक है, तो क्या होगा बताओ. अगर जिस वाटर में फ्रॉग रह रहे हैं, अगर उसमें आयोडीन हटा ली जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा फ्रॉग्स पे, या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? सर थायराइड डेफिशिएंट डिजीजेस होने लगेंगी. क्या होगी वो थायराइड डेफिशिएंट डिजीज? गॉइटर. अरे ना भाई, वो तो गॉइटर तो हमारे आपके अंदर होती है. ठीक है, फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग की. देखो अभी आपने क्या लिखा, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग टैडपोल. मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? फ्रॉग के जो टैडपोल लार्वा होते हैं उनमें टेल पाई जाती है, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं. लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जैसे वो मैच्योर होते हैं तो टेल गायब हो जाती है, टेल डिजनरेट हो जाती है और गिल्स खत्म हो जाते हैं. राइट, इससे वो नया फ्रॉग बन जाता है, वो लंग से रेस्पिरेशन करने लगता है और पूंछ उसमें पूरी तरह से गायब हो जाती है. इसको मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड. तो भाई जब आयोडीन नहीं होगी तो थायराइड नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी. ये उसका आंसर था, मेटामॉर्फोसिस विल स्टॉप इट. समझ आ गया? यस सर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको स्टार बना के लिखो, है ना. नेक्स्ट पॉइंट. इंक्रीज एक्शन ऑफ neurotransmitter. Increase action of neurotransmitter like adrenaline. Increase action of neurotransmitter like adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline. नेक्स्ट, थायरोकैल्सिटोनिन. तो ये तो सब जो फंक्शन थे वो सब फंक्शन थे थायरॉक्सिन, है ना. आप देखो थायरोकैल्सिटोनिन के क्या फंक्शन है.
कैल्शिटोनिन, है ना, नोट करो। इट इज सिक्रीटेड व्हेन कैल्शियम लेवल इज हाई इन ब्लड। It is secreted when calcium level is high in blood. It lowers, ये क्या करता है? It lowers calcium level in blood. It lower calcium level in blood by suppressing release of calcium ion, by suppressing release of calcium ion in bone. अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे थायराइड डिसऑर्डर। तो ऐसे ही हम ग्लैंड पढ़ेंगे, इस ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलते हैं, उसके फंक्शन क्या है, फिर हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफी लंबा है, काफी समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और इसी तरह से हम पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप इतना डिटेल में नहीं दिया हो जाए एनसीईआरटी में, एंड यू विल मिस दैट। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे या रिवाइज नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन साथ साथ मेरे आप करते जाएंगे, ऐसा नहीं जैसे मैं पढ़ा लूं। तो इस वाले चैप्टर में स्पेशली आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली अगर आपने एक बार इसको छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया फिर, है ना। और क्वेश्चन कितने आते हैं आप देख लीजिएगा कि एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने क्वेश्चन इसके आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर। चलो भाई, डिसऑर्डर की बात कर ली जाए। डिसऑर्डर नोट कर लीजिए, थायराइड डिसऑर्डर। तो सबसे पहला क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब क्या होता है, ज्यादा सिक्रीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म को ग्वाइटर या एक्सोप्थैल्मिक को और क्या कहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, और ग्रेव डिजीज इसी को बोलते हैं ग्रेव डिजीज। इसी को भाई साहब बेस्टाउ डिजीज बोलते हैं। बेस्टाउ डिजीज इसी को बोलते हैं, है ना। और इसी को पेरीज डिजीज बोलते हैं। अब देखो इसके कितने नाम, पेरीज डिजीज। राइट, चलिए नोट करिए। It is characterized by exophthalmia. It is characterized by exophthalmia. Exophthalmia जानते हो क्या होता है, ये बताएगा। exophthalmia, आप देखेंगे इंसान की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती है, लगता है कि कोई मतलब घूरता हुआ देख रहा है वैसे आती है। आई बॉल्स होती हैं। हाँ राइट, आई बॉल्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, है ना। तो आदमी की आंखें निकली हुई निकाल, आपको लगेगा कि वो देख रहा है तो नॉर्मल लगेगा वो घूर करके देख रहा है, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, एक्सोप्थैल्मिया नोट कर लो, दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो धक्का देता है तो आई बॉल बाहर आ जाता है। दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल बिकॉज फ्लूइड एक्यूमुलेट behind them. That is protrusion of eyeball because fluid accumulate behind them. Let's stop. Rapid heartbeat, nervousness, rapid heartbeat, nervousness, and restlessness. Rapid heartbeat, nervousness, and restlessness.
सेकंड। तो देखो सेकंड डिजीज क्या है? सेकंड डिजीज है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम सीक्रेशन होना, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर किसी बंदे में कम थायराइड सीक्रेट हो, है ना, तो इसमें कई सारी डिजीज आती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म ऊपर वाली जो डिजीज है ये ज्यादा ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है। अगर आपको निकला हो तो आप इसमें साथ लिख सकते हो ओवर सिक्रीशन, है ना। और हाइपो मतलब कम होता है, मतलब अंडर सिक्रीशन की वजह से होती है। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर सिक्रीशन। अब अंडर सिक्रीशन की वजह से सबसे पहले एक डिसीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म क्या होती है ना, नोट करेंगे। ये बीमारी इन्फेंट्स में होती है, ये याद रखना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इनको अफेक्ट करती है। इन्फेंट्स, नोट करेंगे। इन इन्फेंट्स हैव स्लो बॉडी ग्रोथ। इन इन्फेंट हैव स्लो बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। स्लो बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो बॉडी की ग्रोथ उस बंदे की स्लो होगी और मेंटल जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा जितना एक्चुअली होना चाहिए नॉर्मल बच्चे में, राइट। स्लो बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, कॉमा रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट पॉइंट, पिजन चेस्ट। तो चेस्ट वाला पार्ट ऐसे आगे की तरफ निकला होगा। पिजन चेस्ट एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। पिजन टेस्ट एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। पिजन चेस्ट एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म आप स्टार बना लीजिए, क्रेटिनिज्म इंपॉर्टेंट डिजीज है, इससे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है ना। जिनमें मैं स्टार बनाता रहा हूं आप समझ लीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सोप्थेल्मिया भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा, है ना। मिक्सोडेमा को भी हम लोग गर्ल्स डिजीज कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड गर्ल्स डिजीज। मिक्सोडेमा, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्ल्स डिजीज। और गर्ल्स डिजीज, मिक्सोडेमा और गर्ल्स डिजीज नोट करेंगे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय puffy appearance. It is characterized by puffy appearance due to accumulation of. It is characterized by puffy appearance due to accumulation of subcutaneous tissue. It is characterized puffy appearance due to accumulation in subcutaneous tissue. Because of it, metabolic rate, because of it, metabolic rate reduces in adult. तो आप देखेंगे कुछ लोगों की आंखें सूजी सूजी लगती हैं, पफी अपीयरेंस दिखाई देती है, वो गर्ल्स डिजीज या मिक्सोडेमा उसको बोलते हैं, है ना। एडल्ट में होती है। तो यहाँ पे आप रखेंगे कि मैंने बताया क्रेटिनिज्म जो होता है वो इन्फेंट्स में होता है और ये किस में होता है, ये एडल्ट में होता है ना। अब ऊपर हमने पढ़ा कि ये जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है ना, ये अलग चीज है और सिंपल ग्वाइटर एक अलग चीज है। तो मिक्सोडेमा हो गए। नेक्स्ट दीजिए सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर, अब देखो सिंपल ग्वाइटर क्या होता है। वो नॉर्मली जो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, राजस्थान और हरियाणा में उस रीजन में वाटर में आयोडीन की कमी है इसलिए ज्यादा होता है।
एक क्वेश्चन और पूछा था कि कोस्टल एरियाज में कम क्यों होता है। रीजन क्या होता है, कोस्टल एरियाज में चारों तरफ क्या होता है, ओशन से, ओशंस में लार्ज अमाउंट में एल्गी पाए जाते हैं, एल्गी आयोडीन का सीक्रेशन करते हैं, तो ओशनिक जो वाटर होता है वो आयोडीन रिच होता है। इसीलिए कोस्टल एरिया में जितना भी पानी पाया जाता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो आयोडीन रिच है। इसलिए कोस्टल एरिया में, अच्छा एक और चीज है, कोस्टल एरिया में लोगों का जो फूड है दैट इज सी फूड, और सी फूड में आयोडीन हाई अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए इन कारणों की वजह से कोस्टल एरिया में गोइटर नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा अमाउंट में गोइटर पाया जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन वाटर, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए बाद में डिसीजन लिया कि वो कोई भी सॉल्ट अगर बेचेगा इस कंट्री में तो आयोडीन मिक्स करके बेचेगा, विदाउट आयोडीन नहीं बेचा जाएगा, ताकि लोगों के अंदर आयोडीन की सप्लाई को, कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो नोट करेंगे। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, it is caused by deficiency of iodine which is needed for deficiency of iodine which is needed for synthesis of thyroid comma causes thyroid enlargement है ना। one more disease which is related with hypothyroidism, that is Hashimoto disease. So Hashimoto disease, नोट कर लो। इट इज एन, अंडरलाइन करो भाई, ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब कि कोई बता सकता क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज? बताओ भाई, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? बहुत खतरनाक चीज है ऑटो इम्यून डिजीज, एनी आइडिया? immune system can't make out the difference between human मतलब बॉडी के सेल्स एंड बाहर के सेल्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें ही मारने की कोशिश करे, मतलब आपका गार्ड आपको ही मारना चाहे, है ना, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है, उसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल जो पैथोजेंस वगैरह आते हैं उनके खिलाफ काम करना है। लेकिन अगर किसी केस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगे, उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, ये रखिए ऑटो इम्यून डिजीज, नोट करेंगे। in which it is an autoimmune disease in which thyroid gland is destroyed. Full stop. In this disease, all aspect of thyroid, in this disease, all aspect of thyroid are impaired. In this disease, all aspect of thyroids are impaired. है ना। अब इसी के साथ में एक, अच्छा बताओ पहले यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल से, थायराइड ग्लैंड समझ में आ गया? यस सर। अर्पित आज भाई इतना लेट क्यों हो गए, क्या हुआ, बहुत लेट आए तुम। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। पैराथायराइड ग्लैंड इसी के साथ एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम। देखो ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। अब आप देखो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ इस तरह से बटन की तरफ, है ना, बटन की तरह ये पैराथायराइड ग्लैंड चिपकी हुई होती है और ये दो पेयर में पाई जाती है। आप देखो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इनमें दो तरह की सेल्स पाई जाती है। देखो ये जो आपने देखा ये आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड हो गई
और इस पैराथायरॉइड ग्लैंड में दो तरह की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी सेल्स हैं देखो। अब इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को हम लोग कहते हैं चीफ सेल्स। उनको हम चीफ सेल्स कहते हैं। जो दूसरी सेल्स पाई जाती हैं इन दूसरी सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स दो तरह की सेल्स पाई जाती है ना। अब जो चीफ सेल्स होती हैं इनका कुछ और फंक्शन है और ऑक्सीफिल सेल्स ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो चीफ सेल्स हैं ये पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करते हैं। इसी पैराथायरॉइड हार्मोन को ही पैराथॉर्मोन भी कहा जाता है। also called पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन को ही पैराथॉर्मोन कहा जाता है ना। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम करती हैं, है ना। ये इनका मेनली फंक्शन होता है। और जस्ट चलो नोट करना स्टार्ट करो। द पैराथायरॉइड ग्लैंड is found on posterior lobe. The parathyroid gland found on posterior lobe of thyroid gland. Found on the posterior lobe of thyroid gland. एक सेकंड देना मुझे जरा। अच्छा ऑक्सीफिल सेल्स के बारे में क्या है यहीं पे आप नोट कर लो। बुक्स में दे नहीं रखा, मैं वही देख रहा था। तो इनका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। दे अपीयर एट प्यूबर्टी, अपीयर एट प्यूबर्टी, ये स्टार्टिंग से नहीं होती। एंड फंक्शन इज नॉट नोन, यही लोग फंक्शन इज नॉट येट। अभी तक इनके फंक्शन के बारे में नहीं पता, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड located on posterior surface of the lobes of posterior surface of the lobes of thyroid gland. Full stop. It is made up of chief cell and oxophil cell. It is made up of chief cells and oxyphil cells. Next point. Chief cell secrete parathyroid hormone. Chief cell secrete parathyroid hormone or parathormone. Full stop. It is also known as, it is important,
It is also known as Collip's hormone. It is also known as Collip's hormone. After its discoverer, इसके discoverer के basis पे इसका नाम Collip's hormone भी रखा गया. It is also known as Collip's hormone after the name of discoverer. Next one. It regulate. अब इसका function देखो, function क्या है? It regulate calcium and phosphate balance. It regulate calcium and phosphate balance between blood and their tissue. Between blood and their tissue. Next one. It increases calcium reabsorption. It increases, ये अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है. It increases calcium reabsorption. It increases calcium reabsorption from nephron and inhibit the phosphate reabsorption from kidney. Right. Next heading is disorder of parathyroid gland. So what are the disorder of parathyroid gland? Disorder. So first is hypoparathyroidism. So A is hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism. Please note it down. It causes the lowering of blood calcium level. It causes the lowering of blood calcium level. Full stop. This increases excitability. This increases excitability on nervous muscles and causes, and it increases excitability. It increases excitability of nerve muscles and causes cramp, which is also called parathyroid tetany, which is also called parathyroid tetany or hypocalcemic tetany or hypocalcemic tetany. आपको बताया कि कैल्शियम अगर अमाउंट कम हो जाएगा तो स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है वो सब काम करेगी नहीं है ना. अब दूसरा क्या होता है, एक तो तरीका है भाई कम हो गया है ना, दूसरा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है. सेकंड इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आ जाते हैं. Excess of this hormone draw more calcium from bones. Excess of this hormone draw more calcium from bones. Full stop. It causes demineralization. It causes
mineralization of bone, which causes demineralization of bone, full stop. It leads to osteoporosis. It leads to osteoporosis. Full stop. Next point. Excess of parathormone. Excess of parathormone causes kidney stone. Excess of parathyroid causes kidney stone, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एड्रिनल ग्लैंड. हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए. कोई प्रॉब्लम सर नहीं? पीनियल ग्लैंड स्लीप हार्मोन रिलीज करता है. हाँ, मेलाटोनिन जब तक वो सीक्रेट नहीं होगा, देखो, और वो फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसर भी है, और इसीलिए देखो आप बिना आंख खोल के आप नहीं सो सकते. सर अगर वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा तब सोएंगे कैसे लोग? मे बी कोई और ऑर्गन इसका फंक्शन ऑप्ट कर ले. हालांकि इसके बहुत दिन तक इसका भी फंक्शनलिटी प्रॉपर क्लियर नहीं है. अभी तक जो हम लोगों को पता है वो ये पता है कि दो चीजें, एक तो मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको स्लीप हार्मोन कहते हैं, और दूसरा हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको सेटअप करने का काम करता है. और अगर इस ये डिस्टर्ब हो जाती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है ना? दो ही फंक्शन, बाकी इसके कोई फंक्शन ऑप्ट नहीं है. ऐसा माना जाता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स में कुछ और काम करती रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो गया और आज की डेट में बहुत लाइक एक प्रेस्टिजियल फॉर्म में मौजूद है. मतलब ये धीरे धीरे गायब हो जाएगी ऐसा माना जाता है. तो इसको थर्ड आई भी लोग बोलते हैं. और एक ये हो गया. दूसरा माना जाता है हमारा जो टो है वो गायब हो जाएगा आगे चल करके. अपेंडिक्स गायब हो जाएगी, टो गायब हो जाएगा, मे बी गॉल ब्लैडर भी डिजनरेट हो जाए. राइट, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑर्गन है बॉडी में. सर टो भी गायब हो जाएगा? ये साइंटिस्टों का स्पेकुलेशन है. ये एजम्पशन है, मतलब हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, लॉ नहीं, ये एनालिसिस है. देखो एवोल्यूशन में तो कुछ भी हो सकता है ना, है कि नहीं? मान लो Yes, रेडिएशन ही आने लगे तो रेडिएशन में तो डीएनए चेंज होगा, कुछ और भी हो सकता है ना? साइंटिस्टों का मानना है जिससे जिस डायरेक्शन में एवोल्यूशन जा रहा है ऐसा मानना. ठीक है, yes. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और इसके आगे फिर थैंक यू सर. वेलकम बेटा. चलो बाय बाय, गुड नाइट. Thank you, sir.